Why do some people rely on smartphones to remember things? Mobile phones are they take help of a calendar, notes, or Google, etc. Important because How are you? I'm good, ma'am. How you are? Absolutely fine. So let's start today's speaking. Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we are going to look at the complete mock test. We will have a complete mock test with our student Dinesh, and in the ending back of today's speaking mock test. So without wasting time, let's get started. So what is your full name? My name is Dinesh Kumar. How may I call you? You can call me Dinesh. Okay. Where do you come from? Basically, I am from Himachal, but I'm born and brought up in Punjab, Ludhiana. Very good. So, do you work or study? I work as a gym trainer. I have been working since 4 years now, and now I am certified. Okay, nice. Your job? Yes, of course, I like my job, and I love to do it as a professional. As a professionally. Okay. So, is it very interesting? Yes, it is interesting. That's why I'm doing since 4 years now, and as I said that I am certified now, so I have more interest now. I have, you can say, I I have further plans to pursue it up to higher level. Okay. So moving on to today's first topic. So first of all, these are the basic general questions. These are known as warm up questions. जब भी आप स्पीकिंग के लिए जाओगे तो ये क्वेश्चंस एग्जामिनर्स आपसे 100% पूछेंगे ही पूछेंगे. एंड जैसे कि आपने अभी सुना, इन्होंने काफी अच्छे तरीके से बोला. एक दो जगह पर थोड़ी सी फ्लुएंसी की मिसिंग हुई, अदरवाइज इनके जो आंसर्स थे, सेंटेंसेस की फॉर्मेशंस थी, जो ग्रामर थी, दैट वाज ऑल ओके. एंड आपने भी रिव्यू जरूर बताना है इन द कमेंट सेक्शन, आपको इनकी स्पीकिंग किस बैंड लेवल की लग रही है. सो मूविंग ऑन टू पार्ट 1. फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज breakfast. So what do you have for breakfast? Usually, I eat in a breakfast oats because it gives me energy full day. Usually I eat in a breakfast oats. ये यहाँ पे सेंटेंस की फॉर्मेशन ही गलत है. ठीक है. आई यूजली हैव ओट्स इन अ ब्रेकफास्ट. कई स्टूडेंट्स नॉर्मली ये मिस्टेक्स करते हैं, तो जो भी मिस्टेक्स है अभी इनको इसके बाद इंप्रूव जरूर करना है. आपने ट्राई की ये मिस्टेक्स दोबारा नहीं होनी चाहिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक ब्रेकफास्ट इज इम्पोर्टेंट? Yes, of course, breakfast is important because it gives energy full day for working and it is good for our mental health. वेरी गुड. तो जैसे कि आप सुन रहे हो, आपके जो पार्ट 1 के आंसर्स होने चाहिए, दीज शुड बी शॉर्ट, प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट्स. इसका रीजन क्या है? पहला रीजन ये है कि अगर आप पार्ट 1 में ही लॉन्ग आंसर्स बोलोगे तो पहले ही आप थक जाओगे. सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर आप पहले ही लॉन्ग आंसर्स बोलोगे तो आपको आइडियाज नहीं आएंगे. आइडियाज नहीं आएंगे, फ्लुएंसी ब्रेक होगी. फ्लुएंसी ब्रेक होगी तो बैंड्स भी कम होंगे. इसीलिए जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना है. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, ज्यादातर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम एंड क्वायरीज क्या होती हैं? मैम पार्ट 1 के सभी क्वेश्चन सेम लगते हैं, मैम इसका क्या आइडिया बनाए, मैम इससे ज्यादा और क्या बोल सकते हैं, इसके कैसे बोल सकते हैं. तो इसका सबसे बड़ा आपका मेजर कारण ही यही है कि आप हर एक क्वेश्चन को एक्सटेंडेडली बहुत ज्यादा लंबा खींच देते हो. तो जितना पूछा गया है अगर आप उतना ही, आपके क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चंस के भी आपको आंसर्स पता चल जाएंगे आपने कैसे फ्रेम करने हैं. आर देयर एनी डिफरेंसेस बिटवीन द मॉर्निंग्स ऑफ योर चाइल्डहुड एंड नाउ? And ma'am, can I repeat you again question? Are there any differences between the mornings of your childhood and now? आप There is a यहाँ पे lot of अगर आपका difference क्वेश्चन between नहीं याद रहता तो आप सिंपल बोल सकते हो, यस देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस. दोबारा क्वेश्चन को रिपीट ना करो, इट्स ओके. अगर आप क्वेश्चन को रिपीट नहीं करोगे, इवन इट्स बेटर अगर अपने क्वेश्चन को रिपीट नहीं करोगे तो. There is a lot of difference. In my childhood, I was not wake up at early in the morning and I have a lot of bad habits. But now I am very disciplined for my daily routine. So there is a lot of difference. सो यहाँ पे थोड़ी सी इनकी ग्रामर में मिस्टेक हुई. क्वेश्चन था, आर देयर एनी डिफरेंसेस बिटवीन द मॉर्निंग्स ऑफ योर चाइल्डहुड एंड नाउ? यस देयर आर lots of differences. During my childhood days I used to get up late and I was
involved in, I was indulged in various bad habits. But now in the present, I am quite disciplined, I am punctual, I'm responsible, and I'm well aware of all my duties, and I have my perfect routine and schedule which I follow every day. In this way, you can answer this question. So moving on to next question. To change your morning routine. No, I don't want to change my daily routine because, as I said, that I make a good schedule now. So I don't need to, I think so, I don't need to change my routine. सो यहाँ पर मेन क्वेश्चन क्या था, वुड यू लाइक टू चेंज योर मॉर्निंग रूटीन? तो क्वेश्चन में आपके पास जो भी वर्ब है, आपने उसी वर्ब को कंसीडर करके आंसर में फ्रेम करना होता है. नो आई वुडंट, ठीक है, इन्होंने गलत बोला था तो यहाँ पे क्या आना था, नो आई वुडंट. तो टेंसेस का ध्यान रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. बेशक आप सिंपल आंसर्स बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द थिंग इज आपने ग्रामर की मिस्टेक्स यहाँ पे नहीं करनी, क्योंकि पार्ट 1 इज द फर्स्ट इंप्रेशन, जैसे हम बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. सो ट्राई कि जो भी क्वेश्चंस आपको वर्ब्स में क्वेश्चंस गिवन है, उन्हीं वर्ब्स को लेके आप आंसर फ्रेम करो. अगर वुड है तो वुड, अगर डू है तो डू, डिड है तो डिड, हैव है तो हैव, डू है तो डू. इस तरीके से वर्ब्स को आपने चेंज नहीं करना. सबसे कॉमन चीज है, अगर आपकी कॉमन ही मिस्टेक्स होंगी तो एग्जामिनर्स आपको क्या ही बैंड देंगे. यू कैन थिंक योरसेल्फ. सो एंड ये जो टॉपिक हमने आज किया ब्रेकफास्ट का, ये कल वाले स्पीकिंग के एग्जाम में आया था. जिन्होंने भी स्पीकिंग का एग्जाम दिया था, मेरे 2-3 स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कल एग्जाम में ये टॉपिक आया था. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो नाउ मूविंग ऑन टू क्यू कार्ड क्वेश्चन. The cue card question for today is, Dinesh, describe a historical building you have been to. Describe an historical building you have been to. It is what it looks like, what it is used for now, and what you learned there, and how you felt about this historical building. सो यू हैव 1 मिनट, यू कैन प्रिपेयर. में आपने ध्यान रखना है कि जो भी बुलेट पॉइंट्स आपको गिवन है, आपने सारे के सारे पॉइंट्स जरूर कवर करने हैं. एंड हो सकता है कि एग्जामिनर आपको आपका क्यू कार्ड होने से पहले ही आपको स्टॉप कर दे, तो इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है. एंड एक और बात, जैसे कि दिनेश ने एक क्वेश्चन मुझे दोबारा बोलने के लिए बोला था क्योंकि इनको समझ में नहीं आया था, तो इन सिमिलर मैनर अगर आपको भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, देन यू कैन आस्क द एग्जामिनर टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन. इसमें कोई भी परेशानी वाली या टेंशन वाली बात इसमें नहीं है. सो लेट्स सी दिनेश हैज प्रिपेयर्ड और नॉट. इसी फोटो बना दिया ये, मैं तो कहीं गया ही नहीं किसी जगह पे. मैंने तो वैसी कथाएं चमकाती है अपने दिमाग. नॉट बैड. Traveling is a best way to relax our mind. Here I would like to talk about a historical place I visited. It was a beautiful Lal Bahadur Fort, which is situated in center of Himachal and covered by a lot of mountains. It was astonishing beautiful, and it looked like another fort, but there was a difference that its architecture was created by a hand, and it was so beautiful. Now this place is used as a tourist place. A lot of people every day visit this place, and a lot of international people are also visiting this place. And with the help of this fort, a lot of people are now employed. Like some people are doing guidance tourist work here and giving the information about this fort to the travelers. And top of the floor, as you know that Himachal is a best place for a view. So in the top of fort we can see sunset, which is very beautiful in the evening. And I learned a lot of things about this fort, like who created this fort and why this fort was created, and after the death of king what happened with this fort. And I felt very good about this because we should know about our culture and history, so that's why all and all I felt very good. दिनेश ने बोला 1 मिनट 30 सेकेंड, सो थोड़ा सा कम था. वैसे भी एग्जामिनर्स आपको इतने टाइम के अंदर अंदर स्टॉप कर देते हैं, ज्यादा वो आपसे नहीं सुनते. स्टिल अगर आपने इसको एक्सटेंड करना होता तो आप इसमें एक्सटेंड कर सकते थे टू एक्सप्लेन द ब्यूटी ऑफ दैट fort in the Himachal Pradesh. As you know that Himachal is best known for its mountainous views, serene beauty,
and snow-clad peaks all over the area. Views are and people all over the world specially visit this place to experience these types of views. तो इस तरीके से आप बीच में एडिशंस कर सकते थे. सो नेवर माइंड, ऑल ओवर ठीक था, आपकी फ्लुएंसी भी ठीक थी, ग्रामर में एक दो जगह प्रॉब्लम थी, बट ओवरऑल ठीक था. बाकी जो फीडबैक है, वी विल डिस्कस फीडबैक्स इन द एंडिंग ऑफ दिस सेशन. सो now we are going to start with the follow up questions, but before I start that I would like to tell that मेरे चैनल के ऊपर places के related, persons के related, different things के related and time related I have separate videos, and हर एक का topic मैंने separately cover किया हुआ है with a single sample answer. मतलब one sample answer for all the Q cards related to person and one sample answer for all the Q cards related to places. Must watch all those videos in the playlist speaking part 2. So let's start with the follow-up questions. So first question is, why do people visit historical places? In my last cue card read Lal Bahadur Fort. Which doesn't exist. Which doesn't exist. Chalo. So first question is, why do people visit historical places? Because it is our culture, so I think that it is mandatory to visit historical places, like as I said that Lal Bahadur Fort was a best example for this. सो जिस क्वेश्चन में फॉलोअप्स में आपके पास वाई आ जाता है, तो वहां पर आपके माइंड में एटलीस्ट 3 पॉइंट्स होने चाहिए. एज यू नो दिस इज ए फॉलोअप क्वेश्चन, सो आपका थोड़ा सा लेंथी तभी बनेगा अगर आपके माइंड में 3 पॉइंट्स होंगे. एंड एडिंग एन एग्जांपल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अब क्वेश्चन क्या था, व्हाई डू पीपल विजिट हिस्टोरिकल प्लेसेस? लोग हिस्टोरिकल प्लेसेस पर क्यों विजिट करते हैं? सबसे पहला रीजन, दे आर अ ग्रेट प्लेस फॉर टूरिस्ट अट्रैक्शन. सेकेंड थिंग, दे आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज. Third thing, they impart knowledge, they preserve our history and culture. So there are many points related to this topic. तो आप ये points सारे add कर सकते थे इस वाले question में. And for an example, you can say anything. इन्होंने example दी जो इन्होंने क्यू कार्ड में बोला. तो अगर आपके माइंड में कुछ और एग्जाम्पल है, कोई और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, कोई बिल्डिंग है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डू इंडियन पीपल लाइक विजिटिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस? Yes, a lot of people like to visit a historical place, as I said that because this is our culture, so that's why they should know about their culture. And for example, Golden Temple, we can say that a lot of people every day they are visiting. सो अगर आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन था डू वाला, डू मतलब इट इज यस और नो टाइप ऑफ क्वेश्चन. अगर आपका आंसर यस में है तो यस, लॉट्स ऑफ पीपल डू विजिट हिस्टोरिकल बिल्डिंग. यस या नो में आपने बोल के 2 लाइंस में एक्सप्लेन करना है. देन यू हैव टू ऐड एन एग्जांपल इन द एंडिंग. वैसे जो इन्होंने बोला इट वाज ओके, राइट. तो एक और चीज बहुत ही ज्यादा ना इनकी स्पीकिंग में नोटिस करने वाली है कि इनके कोई भी आंसर स्क्रैम्ड नहीं है. कुछ भी फ्रेजेस इन्होंने एक्स्ट्रा में कुछ भी यूज नहीं किया, कुछ भी इडियम्स इन्होंने बिना बात के यूज नहीं किए, कहीं पर भी एडिशन ऑफ मतलब फ्रेजेस नहीं किए इन्होंने, जो बहुत ही सारा क्रैम्ड लुक देता है, कोई मेमोराइज जैसे स्टूडेंट्स ने किया होता है वो लुक देता है. बिल्कुल इनकी स्पीकिंग इज साउंडिंग क्वाइट नेचुरल. इनके खुद के आंसर्स हैं जो इन्होंने जनरेट किए हैं. सो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज स्पीकिंग दैट आई लाइक द बेस्ट. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, should government fund protection of historical places? Of course, government should fund for protection of historical places because it is our nationality and it shows our nationality. Like It represents our culture it's represent and heritage. Okay, like we can say about Red Fort or Taj Mahal nowadays. For air pollution, cause of air pollution, Taj Mahal was Is destroying. So that's why Government should fund. सो यहाँ पर भी मतलब शुड गवर्नमेंट फंड भी, गवर्नमेंट को फंडिंग हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सो ऑब्वियसली यस, गवर्नमेंट शुड हेल्प बिकॉज इट हेल्प्स टू प्रिजर्व आवर कल्चर, our heritage. It's a great source of knowledge. You can say without our history we can't forward our generation anything regarding our historical background. So moving on to next question, is it necessary to protect historical buildings?
ये तो रिपीट वही होगा फिर से, अब इससे क्या ही बोलूँगा ऊपर। Oh God. Necessary to protect historical buildings nowadays, cause of air pollution. Taj Mahal is destroying, and for that purpose, government should focus on this also, I think. So last question में था भी गवर्नमेंट को, no, so the question is it necessary to protect the historical buildings? भी historical buildings को protect करना जरूरी है, necessary है? Definitely it's quite important to protect our historical buildings as it is the culture, historical background of every country or every nation. So it's the duty of government as well as people to help in the protection and maintenance of historical buildings, as they are the only source of the knowledge related to our past events, historical achievements and the bravery that many of the people showed in the past. सो इस तरीके से आप इसका आंसर बोल सकते थे। तो ओवरऑल इनका जो लेवल था दैट वाज ऑफ 6.5 बैंड अकॉर्डिंग टू मी, जो बहुत ही जेन्युइन लेवल है। 6.5 लेवल का अपना इंप्रूव किया है फ्रॉम 0 टू 6.5। पहले इनकी बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल स्पीकिंग थी। ही इज फ्रॉम पंजाब बोर्ड, ही इज पास आउट एंड इनके स्टडी में भी काफी ज्यादा गैप है। अगर ये विद इन 3 मंथ्स इंप्रूव कर सकते हैं तो आप भी विद इन 3 मंथ्स यू कैन ऑल्सो इंप्रूव अ लॉट। So do watch all of my videos related to speaking part 1 and part 2. And if you like this video, do give it a thumbs up, share it with your friends, and don't forget to subscribe my channel for daily informative videos on IELTS. Until then, stay happy, stay healthy, and all the very, very best for your IELTS preparation. बहुत है। Yeah.